Hi guys, in this video we will see what is Ingress and how to install the Ingress controller and what's the benefit of it and what's the reason why we are using it Ingress, why we are not using a simple service. Let's say for a recap what we have done inside a cluster. We have made a namespace. This is our next namespace in which our bunch of pods are running. Bunch of next pods are running. How we created the pods? We created the pods by using deployments. Deployments created a replica set. Replica set provides a desired number of pods inside the worker nodes. We have already seen what are replica sets and what are deployments. In the yesterday's video we have seen how are we exposing these pods via service. उल्टा बन गया ये, दोबारा बनाने दो. How are we exposing our nav? We exposed by load balancer. The outside request comes to the load balancer. Load balancer routes them to the our pods. What's the drawback of this? Our application is hosted. If I go to our load balancer, copying this DNS, you will see our Next.js app is running and hosted. You can add this into your DNS records and give it a domain name. Your app is hosted, nothing wrong. But when you make your application big, let's say this is your cluster, assume this is a worker node in which, let's say these are the worker nodes, worker node 1, worker node 2, worker node 3. Inside this, let's say your next front end is running, your simple Node.js backend is running Express, using Express. Let's say your database, your other service, other backend, let's say WebSocket. To expose them, first you can do this via cluster IP, that's also fine. To give them a host, to request them outside of this cluster, how can you make it? That we already learnt it using load balancer. हमको बाहर से कोई अगर रिक्वेस्ट मारनी है बैकएंड पर, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट हम बैकएंड पर कैसे मारेंगे? हम क्लस्टर आईपी तो यूज़ नहीं कर सकते. से हम ब्राउज़र से बैकएंड पर हिट करें, लेट्स से /API/get users, हम यहाँ से हिट करेंगे तो वो क्लस्टर पे कैसे जाएगी रिक्वेस्ट? हमें ब्राउज़र से एक्सेस थोड़ी ना है क्लस्टर का. टू एक्सपोज दिस बैकएंड, to expose this WebSocket, we will use a load balancer. इसके लिए front end load balancer, इसके लिए WebSocket load balancer, इसके लिए back end load balancer. कैसे रिक्वेस्ट आएगी इधर? ये कलर बना दिया मैंने. इस लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड के पोर्ट पर, इससे रिक्वेस्ट आएगी WebSocket के. लेट मी चेंज द नेम, WebSocket लोड बैलेंसर, बैक एंड लोड बैलेंसर. सो आपको देख के ही नज़र आ रहा होगा, अरे भाई अब मैं तो 3 लोड बैलेंसर क्रिएट करने की ज़रूरत है. और
as you know, load balance are a expensive operation inside the AWS, so we cannot use this will make our bill very high. So instead of this we use a Kubernetes concept called ingress. What is ingress? It lets you route traffic to different services. What it does, हम सीधे ड्राइंग बना के देखते हैं, क्योंकि ड्राइंग से ज़्यादा समझ आता है इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन वाइज। मैंने क्या बोला, इंग्रेस से हम सर्विस को राउट करते हैं। वी राउट डिफरेंट सर्विसेज बाय यूजिंग अ ingress. What I'm talking about, let's say this is our service. First let's say this is our front end pod in which Next.js. Say this is our back end, this is our WebSocket. We created a service, we will create a service for these three as the arrow, for front end also, for back end also, for we will create a single service, not a single service, we will create as different services for these different applications running in a pod. Then we will use a ingress here. What is ingress? We will use a ingress and here we will give routing options. राउटिंग ऑप्शंस कि लेट्स से अगर हम इसमें बोले स्लैश API, मतलब कि ये इस सर्विस पे जाए रिक्वेस्ट। अगर हम ऐसे बोलें स्लैश WS तो वो वेब सॉकेट पे जाए रिक्वेस्ट। और हम इससे बोलें कि अगर खाली इस राउट पर आ रही है, होम राउट पर आ रही है, तो फ्रंट एंड पे जाए। So for this, to ingress we use a ingress controller. What is this? Ingress controller. It will give access to the ingress to route them. In ingress we will write the paths, routing paths. Ingress controller lets us to use these paths, मतलब ingress controller हमें वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि हम उससे ऐसे path based routing कर सकें। And how can we expose it? We will simply expose this ingress via load balancer. We will expose via load balancer. That's our architecture. What's if a user will hit this route? If the user will, for let's say this is our ingress load balancer, if the user hits this, the request will go to backend. If the user hits like slash API, then the request will go to backend. And if the request was like, let's say socket AWS, the request will go to the WebSocket layer.
As you can see, by using the ingress we only have to create only one load balancer that will do the work for us, and it will कंज्यूम थोड़ा कम बिल बनाएगा वो, इंस्टीड ऑफ कि हम हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट लोड बैलेंसर बनाए, हमने एक ही लोड बैलेंसर बना दिया जिससे हम राउटिंग बेस्ड सर्विस को राउटिंग के बेस पर हम राउट कर रहे हैं कि फ्रंट एंड इस पे आए तो फ्रंट एंड वाली सर्विस चालू हो जाए, यूज़ हो जाए, इस पे आए तो ये बैक एंड वाली सर्विस पे स्लैश API पे आए तो बैक एंड वाली सर्विस यूज़ हो जाए, एंड rest are same. So that's our ingress is. In practical that we'll do the next, we will see how can we create the ingress.yaml and how can we install this controller. That's the main important thing, to install this. Otherwise how can this routing, we cannot use the ingress.yaml directly to route. First we have to use this ingress controller. Where this ingress controller will get installed? In the control plane in the kube control manager, where we see the node controller, replica set controller, deployment controller. Now we will install from, वो हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे कि ये वाला कंट्रोलर हमारे क्यूब कंट्रोलर मैनेजर में चला दिया जाए, जिससे हम की इंग्रेस वाली राउटिंग यूज़ कर सकें. So before, simple thing is, before using ingress.yaml, before writing this ingress.yaml, before writing these route options, route paths, first we will have to install ingress controller. There are, अभी बता देता हूँ मैं, बाद में मेरे को सेक्स का ली ड्रॉप पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि we can install different, there are different kinds to install the ingress controller. First is simply there is long manifest file present on the internet. Simply apply this file using this URL. What's this file? Let me see. It's a simple file. This is the simple kinds that we already seen. There's a namespace. If I write deployment, there's a deployment. If I write service, if I write kind service, there's service account, service, that we already seen. So it's a long YAML present on the internet. To install this long code, we don't have to write our own ingress control. We can write it. It's a simple Nginx controller that we will do. I can make a separate video about this, how can we make our own Nginx ingress controller. हाँ, ये तो पता ही नहीं. There are different kinds of ingress controller. You can use Nginx controller. हमको अभी राउटिंग बेस वाला चाहिए, जिससे हम बढ़िया राउटिंग कर सकें. So we will use the Nginx controller. There HA proxy ingress controller भी आता है, and there are different types of ingress controller present. Instead of writing this long code inside our manifest by manually creating this is already present on the internet. I will provide a link in the description box. Simply apply this kubectl apply -f, this URL. It will install this controller in the kube controller manager in the control plane node. Second thing, by using Helm, it's also a one-line code, but we have not see how Helm works, how to install Helm, how can we install things using Helm.
So we will not use now, but we will use Helm in the phase 3 where we do the monitoring stuff. So that's the ingress. Let's in the next part we will see how can we create these routing based services in the practical mode. Let's go to the terminal. So let's see how the ingress works. We are in our cluster. I make a fresh cluster. If I write kubectl get pods, there's nothing. It's a fresh cluster. You can make cluster at any cloud provider you want. This is a premium content that I am providing. There are few resources, those who provide this limited content. Some of them just provide you the theory. Some of them provide you some एक दो पॉड चला के दिखा देंगे. No one will show you this much. So let's see how the ingress works in the cluster. Let's make our manifest files. First of all, let's apply our manifest that we created in the previous videos. For the first manifest we apply kubectl apply dash f namespace.yaml. Then we apply our deployment that will start pods. Our pods are created. If I say kubectl get pods, what's the name of one manifest? Namespace. Next, you will see 3 replicas are running of our Next.js container. Let me see my audio is recording. Yes. So what's the third file? We have to expose it, but we are not going to use the load balancer service. We are going to use the cluster IP. Means we can access this app via inside cluster. Now this service is no longer can be accessible by outside of the cluster. अब इसको एक ही चीज़ एक्सेस करेगी, वो होगा हमारा ingress. Let me apply it. kubectl apply service.yaml. Our service is creating. Before creating the ingress manifest, let's install the Nginx ingress controller. Nginx ingress controller is the link. I will provide this link in the description box. You just have to copy this link. In the first you can see there is a namespace in which all the pods services will run. If I say kubectl apply -f this file, you can apply it like this also. Doesn't care if the file is on internet or the file is on local machine, the file just have to be there. If I write kubectl get namespace, you can see our ingress nginx namespace. Where's the ingress nginx namespace is created. If I copy it, clear it, kubectl get pods, or you can what called kubectl get all. Get all command क्या करती है? Bring all of the resources inside this namespace.
इन व्हाट नेम स्पेस ingress nginx। अब ये हमको सब कुछ ला के दे दिया। दैट्स आवर pods आर रनिंग, there's one pod running, there's two completed, might maybe some jobs or cron, maybe some jobs। what are jobs? It's a short life cycle pods जो कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए ही रन होते हैं और अपने आप बंद भी हो जाते हैं। जैसे कभी हमें बैकअप लेना है एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो हम क्रॉन जॉब्स बनाते हैं कि 5 बजे, शाम के 5 बजे हमारा बैकअप हो जाए अपने आप। सो हम ऐसे क्रॉन जॉब्स बनाते हैं, जॉब्स होती हैं। जॉब्स एंड क्रॉन जॉब्स आर डिफरेंट। जॉब्स एक बार चलती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, क्रॉन जॉब्स शेड्यूल पे चलती हैं। यू कैन सी दिस ingress nginx has created a load balancer। now all the traffic will come to this load balancer। if I go to my instance and go to load balancer, you can see we have not created this load balancer by any service। this load balancer is created by what? the nginx controller, ingress nginx controller, in which the service is what? load balancer। now every route will come to this load balancer IP। there's deployment running, replica deployment है तो replica set भी होगा। there's jobs, you can see jobs। let us clear it, let's write the main file that this video depends on, ingress yml। press I to insert। let's write the first thing, API version, V is capital, API version। what's the API version of it? it's different, it is networking। what's the group name in this? networking.k8s.io, that's the group name, and in which version of Kubernetes it's introduced? it's a V1 kind। what are we making? we are making an ingress metadata। what's the name of the ingress? let's say next ingress। सब चीज़ हमारी next से शुरू है। हमारा नेम स्पेस किस नेम स्पेस में चलाना है? लेट्स से नेक्स्ट नेम स्पेस में चलाना है। what are the specification of this? ingress class name, ये कौन सी क्लास का इंग्रेस चल रहा है, मतलब कौन सा इंग्रेस चल रहा है, कौन सा कंट्रोलर चल रहा है? तो nginx, वी हैव इंस्टॉल्ड व्हाट? nginx ingress controller। why we using nginx? because it's provide reverse proxy। if you want a special video on nginx, let comment it, I will make one। so rules, here are rules, s मतलब bunch of rule, so list होगी hyphen। here you can type host when you have domain, so you can write your domain here, like you have Google front end, so what's the host? www.google.com पे अगर मेरा रिक्वेस्ट आती है तो वो लैंडिंग पेज पे चले जाए। अगर मेरी रिक्वेस्ट api.google.com पे आती है तो वो मेरी बैकएंड पे चली जाए। अगर websocket.google.com पर आती है तो मेरी वो रिक्वेस्ट WebSocket पे चली जाए। तो डोमेन नेम वी राइट इन होस्ट। currently we don't have a domain name, so we skip that part। in http we write paths, it's also a
list or an array, we give it a path / home route, path type prefix, backend सर्विस, हमारी सर्विस का नाम क्या है, नेक्स्ट सर्विस, कौन से पोर्ट पर चल, लेट मी सी माई माइक वर्किंग, कौन से पोर्ट पर चल रही है हमारी सर्विस, 80 पोर्ट पर चल रही है सर्विस, पोर्ट नंबर 80 लिखा जाता है इसमें, नंबर 80. So that's it, that's our ingress, escape :wq, apply this, apply -f ingress.yml. You can see ingress networking.kts.io, next ingress created. How to access them, we have to go to the load balancer. What's the load balancer, I forgot, let me see, kubectl get service, nginx ingress था कि ingress nginx था, ingress nginx था शायद, ingress nginx, yeah, there's our external IP or load balancer IP, copy this IP, go to your browser, paste it, you can see our next step is running. So where it is requesting, ट्रैफिक कैसे आ रहा है, ब्राउज़र से ट्रैफिक जा रहा है nginx ingress कंट्रोलर के लोड बैलेंसर पे जो सर्विस चल रही, जो ingress nginx कंट्रोलर ने जो लोड बैलेंसर चलाई है उस पे ये ट्रैफिक आ रहा है हमारा. सो वी आर नॉट लॉन्गर हिटिंग द सर्विस, लोड बैलेंसर सर्विस ऑफ आवर फ्रंट एंड Next.js pod. So this is the Next.js. Let me show you how routing works. For let's say if I create a nginx deployment, what I am going to do now, अगर हमारे /API लिखें तो nginx चले, अगर खाली कुछ नहीं लिखें तो हमारी ये फ्रंट एंड चले. Let's say how can we make this. For first we have to create some pods of nginx. How can we create deployment, ये तो हमें अब तक याद हो जानी चाहिए. Don't learn it, ये तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगी. कुछ यूट्यूबर्स कहेंगे कि यार इंटरनेट से देख लो, बट प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करो कि वो तुम्हें याद ही हो जाए. सो व्हाट्स द API वर्जन, app/v1 काइंड क्या बना रहे हैं हम, स्टोरी जैसे याद करो इसको हमेशा. मेटा डेटा नेम क्या होगा, nginx डिप्लॉयमेंट किस नेम स्पेस में चलाएंगे, नेक्स्ट नेम स्पेस में चलाएंगे, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ इट, रेप्लिकास कितने रेप्लिकास चलाने हैं, लेट्स सी 1, एक ही रेप्लिका बहुत है. सेलेक्टर किस किस पॉड को सेलेक्ट करना है जिसके रेप्लिकास बने, मैच लेबल्स, ऐप nginx ऐप, लेट्स से सेलेक्टर टेम्पलेट मेटा डेटा, पॉड की टेम्पलेट क्या है, मेटा डेटा में पॉड का नाम देना ज़रूरी नहीं है बट लेबल्स देना बहुत ज़रूरी है. स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पॉड, कंटेनर्स कौन कौन से कंटेनर चलाते हैं. फॉर दिस प्लेलिस्ट वी आर मेकिंग अ सिंगल पॉड कंटेनर, सिंगल कंटेनर पॉड.
What's the name of this container? Nginx. What's the image we are using? Nginx. What are the ports? ये किस पोर्ट पर चलती है? I think Nginx runs on 80 port. That's our deployment. Let us create a Nginx service also. We have to create a service, yes. Insert API version service तो core concept है, तो भी kind क्या बना रहे हैं हम? Service metadata name Nginx service namespace next specification selector उसको सेलेक्ट करो जिसका लेबल Nginx ऐप हो. What are the ports? You can give it a name. दे दो भाई नेम, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोटोकॉल क्या रहेगा? TCP. पोर्ट किस पोर्ट पर चलनी चाहिए? We cannot give 80 because our Next.js app is running on port 80. For let's say the Nginx will run port 81 of our cluster, not our cluster. Port 81. और टारगेट पोर्ट क्या है? टारगेट पोर्ट तो 80 है. किस and the type will be cluster IP. Let me apply these both files that we created. Apply -f nginx pod deployment created Nginx service. Our service and deployment created. Let me see. kubectl get all सब कुछ ले आओ in the namespace of next. हमारे तीन पॉड चल रहे हैं Next.js के, और एक रेप्लिका चल रहा है हमारा Nginx का. Our replica sets are running. Everything is running, no errors. So now we configure, we change our ingress to the route based. Let's say हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. We are going to this rules, add a rule, http path, same thing. Add a path /API पे जो रिक्वेस्ट आए हमारी. path type prefix, backend सर्विस. हमारी Nginx सर्विस का नाम क्या था? Nginx SVC. किस पोर्ट पर चल रही थी? हमारी नंबर 81 पर चल रही थी. We have configured it. :wq ctl apply -f ingress.networking.kts.io next ingress configured. If I go to this URL, refresh it, home route पर हमारी एप्लीकेशन चल रही है. If I write /API, you can see this is Nginx page. If you are guessing why it is giving an error, because the /API Nginx में कोई कुछ नहीं होता.
nginx इमेज में /API route कुछ नहीं होता। तो हमको to run this we have to give a annotation. What are annotation? It's like modified something in the controller, the nginx ingress controller। annotations क्या होती हैं? की वैल्यू पेयर होता है जिससे कंट्रोलर में कुछ थिंग मॉडिफाई हो जाती हैं। इट डजंट चेंज सम इम्पोर्टेंट चीज़ें, खाली कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। इन एनोटेशंस आई विल राइट nginx डॉट ingress डॉट kubernetes डॉट io slash rewrite। I'll showing this is just for to show the nginx page. Don't use this rewrite target in the next application. If you use this, your Next.js API routes, the inbuilt API routes in Next.js will not work, because what it does, it's आप कुछ भी डालोगे वो उसको स्लैश बना देगा, होम राउट पे ही चेंज कर देगा। if apply-f configured, if I write now, you can see welcome to nginx, our page is running, and if I go to my home route, its app is running. If the path is in Next.js, how we do the inbuilt routing? We use a API folder in the app folder, in which we make the routes, the backend routes. Now what it does कि अगर API से शुरू होने वाली पे कुछ भी आता है स्लैश, तो इसको हटा के खाली एक होम राउट बना देगा ऐसे, और जो कि nginx का होम पेज है। इफ़ आई राइट एनीथिंग /API what is saying you are welcome to nginx. So write this in your notes कि अगर आप अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में इस एनोटेशन को यूज़ नहीं करोगे कभी। That's it, that's the ingress. We have completed our phase 2. After this, what we will see, what are GitOps and how can we auto deploy our app. We will see tomorrow how it works. We are going very slowly. Your app is deployed. You can give this a domain name, give this IP a domain name, and your app is deployed. The next thing is a high level, is more than इंटरव्यूअर कभी पूछेगा ही नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो ये सब चीज़ें जो नेक्स्ट होंगी वो कभी पूछेगा ही नहीं। जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें होंगी। सो इधर हमारा बेसिक क्यूबरनेटिस ख़त्म होता है। दैट्स द बेसिक थिंग्स यू नो इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। मोस्टली यहीं तक पूछेगा वो, ज़्यादा कि मुझे पता नहीं है इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा हो। सो थैंक यू, दैट्स इट।